Good morning, dear students. Today we are going to start, that is the chapter number 5. Remaining part we will discuss today, the schooling and education today. Now we have to compare from the past to the present situation. Today the scenario is how the schools are going on, how they are getting the education, whether the boys and the girls are getting equal education or not. So let us discuss. Today, both boys and girls attend the school in large numbers. Everywhere you have seen now, co-education is there. Boys and girls are sitting together and they are getting the education. Yet, as well as we will see, there will still remain differences between the education of boys and girls. So now we will discuss with the help of the datas कि whether 100% boys are going to school or 100% girls are going to school, and what is the ratio and what is the discrimination between the boys and the girls school education. India has a census every year. Underline कर लीजिए, after every 10 years the government is doing the census. What is census? According to that we have to calculate the population. According to that we will calculate the literacy rate of our country. So now it will be in 2021, which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, what is their age, what is schooling, what work they do, and so on. ठीक है, जब population का census होता है बेटा, they have to ask all these questions. We use this information to measure many things like the number of literate people. Literate means educated people, and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men. ठीक है, अगर हम सेंसस को देखें 1961 से, now we are compare the census of 1961 to 2011. 7 years and old above were literate, that is they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census 2011, the figure have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women. 2011 देख लीजिए रेशियो. आप कहोगे मैम अभी 9 years अब बाद में फर्दर बता रहे हो 2021 का रेशियो स्टिल वी डोंट हैव, सो वी हैव टू बी टेक दिस एज ए लेटेस्ट डाटा. तो 82% हमारे पास क्या है, बॉयज रीड कर रहे हैं, एजुकेटेड है, दोज हु कैन रीड एंड राइट. अभी भी गर्ल्स की रेशियो कम है, दैट इज ओनली द 65%. So what it means? This means that proportion of both men and women are now able to read have at least some amount of schooling has increased. इतना तो हमें पता चला कि इंडिपेंडेंस के बाद इंक्रीजिंग हुआ है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, इवन गर्ल्स की रेशियो भी इंक्रीज हो रही है, बट नॉट एज इक्वल टू द बॉयज एंड men. The percentage of male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. हम इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने डेवलपिंग स्टेज पे आ चुके हैं, बट स्टिल दैट हम इस रेशियो को, इस गैप को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं. Here is a table that shows the percentage of the girls and boys who leave schools from different social groups including scheduled caste and scheduled tribe. अभी 2014-15 की टेबल है बेटा. इस टेबल में हम क्या शो कर रहे हैं, आपको ड्रॉप आउट रेट दिखा रहे हैं कि जो बच्चे एजुकेशन छोड़ देते हैं. ठीक है, ओवरऑल दिखा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं. इसको हम कंपैरिजन करके चलेंगे. प्राइमरी क्लासेस फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक की बात में ओवरऑल देखो तो गर्ल्स कितने ड्रॉप आउट कर देते हैं, 3.88, और बॉयज कितना कर देते हैं, 4.36. अब इनमें से भी अगर आप शेड्यूल कास्ट से कंपेयर करो तो शेड्यूल कास्ट में गर्ल्स कितना ड्रॉप आउट कर रही है, 4.20, और बॉयज कितना कर रहे हैं, 4.71. टोटल रेशियो देखो, शेड्यूल कास्ट की कितनी कम हो रही है, 4.46, और शेड्यूल ट्राइब की देखोगे तो ये रेशियो और इंक्रीज हो जाती है, दैट इज 6.93. In the same way, you can see the upper primary classes. Which are the upper primary classes? 6 to 8. मतलब प्राइमरी से जो थोड़ा सा अपर है, 6 to 8 classes are called upper primary classes. इनका रेशियो कंपैरिजन करके देखिए. Then we come to the secondary classes, 9th and 10th. इसका ड्रॉप आउट देखिए, अब टोटल से कंपेयर कीजिए. टोटल ड्रॉप आउट कितना है, 17.06, और जबकि शेड्यूल कास्ट का कितना है, 19.36, और शेड्यूल ट्राइब्स का कितना है, 24.68. इट मीन्स
अभी भी बैकवर्ड लोग जो ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे लीव देयर क्लासेस between the 9th and 10th classes. So we will discuss in detail now in this para. You have probably noticed in the above table that scheduled caste and scheduled tribe girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that girls from Dalit, scheduled caste कौन लोग हुए, दलित ग्रुप, और ट्राइबल ग्रुप क्या कहा जाएगा, आदिवासीज, backgrounds are less likely to remain in school. There are so many reasons behind it बेटा. इनके इस एरियाज में स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्कूल्स में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, दे बिलोंग टू वेरी पुअर कम्युनिटीज, so they are not affordable pay the fees to the schools. So there are different reasons behind it. The girls schools are not working properly. The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than scheduled caste and scheduled tribe girls to complete primary schools, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in the school. अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो अपनी बच्चियों को सिर्फ 3 years तक स्कूल भेजते हैं. ठीक है, पढ़ना आ गया, नाम लिखना आ गया, बहुत है बस. और उसके बाद गर्ल्स के लिए स्कूलिंग नहीं है उनके लिए. इन द सेम वे अगर हम और कंपैरिजन करें कम्युनिटीज़ की, लोअर कम्युनिटी की, वो 4 years तक, 5 years तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 तक पढ़ा देते हैं. आपको मालूम होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट ने इनकी ग्रेजुएशन लेवल तक की फ्री एजुकेशन कर रखी है गर्ल्स की, बट इवन देन भी हम रेशियो को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं, इक्विवेलेंट टू द मेन. There are several reasons. Some reasons I have discussed. So let us see the reasons given in this para. Why children from Dalit, Adivasis and Muslim communities leave schools in many parts of the country. Especially in rural and poor areas, there may not even the proper school, not teachers who teach on regular basis. आपने देखा होगा इतने ट्राइबल एरियाज में कहीं कहीं टीचर्स ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है टीचर्स की उनके पास, स्कूल्स में सिटिंग ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, नेम का पेपर्स में स्कूल है. If a school is not close to people's home, उनके घरों के पास स्कूल नहीं है, and there is no transport like buses and vans, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वाले तो बस और वैन भी प्रोवाइड नहीं करते हैं. पेरेंट्स may not be willing to send their girls to school. अब अगर घर से दूर स्कूल है तो वो विलिंग ही नहीं है कि हमारी बच्चे इतनी दूर जाएं, ड्यू टू देयर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. Many families are too poor and unable to bear the cost of education and all their children. अब वो इतना मजदूरी करके तो अपना घर का गुजार चला रहे, 2 वक्त का खाना नहीं उनके पास, सो दे नेवर थिंक फॉर द स्कूलिंग. यू हैव सीन इन योर सराउंडिंग सो मेनी पीपल दोज हु आर नॉट सेंडिंग देयर गर्ल्स और द बॉयज टू स्कूल. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmate, just like Om Prakash Valmiki was. Om Prakash Valmiki की स्टोरी याद आई क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट बिलोंग करता था तो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे. तो मे बी ये भी रीज़न रहे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स भी बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव ना करें, तो दे हैव डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. So there are different schemes have been launched by the government to save the girl child. देखो लेटेस्ट क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो कितना हम लोग वर्क कर रहे हैं, बट इवन देन वी आर नॉट एबल टू बी गेट द 100% लिटरेसी रेट फॉर द गर्ल्स. So I hope you understood the concept.